Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu, and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So, here are the next set of 25 words. We'll start with the first word gratuity. A sum of money given to an employee in addition to regular wages, typically as a reward for good work. ग्रेच्युटी को हम हिंदी में उपहार कहते हैं, उर्दू में इनाम, तेलुगु में बहुमानमु. For example, the company provides a gratuity to employees who have completed 10 years of service. Next word is grave, a place of burial for a dead body, a tomb. ग्रेव को हम हिंदी में कब्र कहते हैं, उर्दू में कब्र, तेलुगु में समाधि. For example, flowers were laid on the grave in remembrance of the departed soul. Next word is graveyard, a place where dead bodies are buried, a cemetery. ग्रेवयार्ड को हम हिंदी में कब्रिस्तान कहते हैं, उर्दू में कब्रिस्तान, तेलुगु में स्मशानम. For example, the old graveyard had tombstones dating back several centuries. Next word is gravity, the force that attracts objects towards the center of the earth or any other celestial body. ग्रेविटी को हम हिंदी में गंभीरता कहते हैं, उर्दू में संजीदगी, तेलुगु में गांभीर्यम. For example, gravity is what keeps planets in orbit around the sun. Next word is greed, intense and selfish desire for something, especially wealth, power or food. ग्रीड को हम हिंदी में लालच कहते हैं, उर्दू में हिर्स, तेलुगु में अत्याशा. For example, the king's downfall was his greed for more land and riches. Next word is greedy, having or showing an intense and selfish desire for something. Greedy को हम हिंदी में लालची कहते हैं, उर्दू में हिरसी, तेलुगु में अत्याशी. For example, the greedy businessman exploited his workers to increase profits. Next word is greeting, a polite expression of goodwill or courtesy when meeting or communicating with someone. Greeting को हम हिंदी में स्वागत कहते हैं, उर्दू में खुशामदीद, तेलुगु में स्वागतम. For example, the warm greeting from the host made the guest feel welcome. Next word is gregarious, sociable, fond of the company of others. Gregarious को हम हिंदी में साथीपन कहते हैं, उर्दू में मिलजुल कर रहने वाला, तेलुगु में समूहमयना. For example, her gregarious nature made her the life of the party. Next word is grief, intense sorrow especially caused by someone's death. ग्रीफ को हम हिंदी में शोक कहते हैं, उर्दू में गम, तेलुगु में दुखम. For example, the family was overwhelmed with grief after the loss of their beloved pet. Next word is grievance, a real or imagined wrong or injustice causing complaint or resentment. Grievance को हम हिंदी में शिकायत कहते हैं, उर्दू में शिकायत, तेलुगु में बाधा. For example, the employee filed a grievance against unfair treatment in the workplace. Next word is grieve, to feel intense sorrow or distress, especially over a loss. Grieve को हम हिंदी में शोक मनाना कहते हैं, उर्दू में गमगीन, तेलुगु में दुखमु कलिगिंचु. For example, it takes time to grieve the death of a loved one. Next word is groan, a deep mournful sound expressing pain or discomfort. ग्रोन को हम हिंदी में कराहना कहते हैं, उर्दू में कराहना, तेलुगु में एडुपु. For example, the old floorboards would groan with every step. Next word is groceries, food and other goods sold by a grocer or supermarket. Groceries को हम हिंदी में किराना कहते हैं, उर्दू में किराना, तेलुगु में किराना. For example, she went to the store to buy groceries for the week. Next word is groom, to clean and care for the appearance of oneself or someone else, especially before a formal event, a person who is getting married. Groom को हम हिंदी में दूल्हा कहते हैं, उर्दू में दूल्हा, तेलुगु में वरुडू. For example, the bride and groom looked radiant on their wedding day. Next word is grudge, a persistent feeling of ill will or resentment resulting from a past insult or injury. Grudge को हम हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं, उर्दू में नफरत, तेलुगु में ईर्ष्या. For example,
Holding a grudge can negatively impact one's mental well-being. Next word is grueling. Extremely tiring and demanding, exhausting. ग्रूलिंग को हम हिंदी में कठिन कहते हैं, उर्दू में मुश्किल, तेलुगु में कष्टमु. For example, the athletes faced a grueling training regimen to prepare for the competition. Next word is grumble. To complain or protest about something in a low रम्बलिंग वॉइस. ग्रम्बल को हम हिंदी में असंतोष दिखाना कहते हैं, उर्दू में शिकायत करना, तेलुगु में असंतृप्ति तो गुणुकु कोनु. फॉर एग्जाम्पल, द वर्कर्स began to grumble about the long hours and low pay. Next word is guard. A person or group of people whose job is to protect someone or something. गार्ड को हम हिंदी में रक्षक कहते हैं, उर्दू में हिफाजत करना, तेलुगु में रक्षकुडु. For example, the security guard ensured only authorized personnel entered the building. Next word is guidance. Advice or information aimed at resolving a problem or making a decision. Guidance को हम हिंदी में मार्गदर्शन कहते हैं, उर्दू में हिदायत, तेलुगु में मार्गदर्शना. For example, the counselor provided guidance to students on career choices. Next word is guide. A person who leads or directs others on a journey or through unknown territory. गाइड को हम हिंदी में मार्गदर्शक कहते हैं, उर्दू में रहनुमाई, तेलुगु में मार्गदर्शकुडु. For example, the tour guide explained the history of the ancient ruins. Next word is guidelines. General principles or rules to be followed in certain situations. Guidelines को हम हिंदी में दिशा निर्देश कहते हैं, उर्दू में हिदायतीन, तेलुगु में मार्गदर्शनलु. For example, the company provided clear guidance for employees' conduct. Next word is guilt. The feeling of having done something wrong or committing an offense. Guilt को हम हिंदी में अपराध कहते हैं, उर्दू में गुनाह, शर्मिंदगी, तेलुगु में अपराधम. For example, after the accident, he experienced overwhelming guilt. Next word is guilty. Responsible for committing a crime or offense, feeling culpable. Guilty को हम हिंदी में दोषी कहते हैं, उर्दू में मुजरिम, गुनहगार, तेलुगु में दोषी. For example, the jury found the defendant guilty of the charges. For example, the jury found the defendant guilty of the charges. Next word is gulp. To swallow something quickly and audibly. गल्प को हम हिंदी में निगलना कहते हैं, उर्दू में निगलना, तेलुगु में ओक्कसारिगा मिंगिवेयु. For example, he took a gulp of water to quench his thirst. Next word is gargle. The bubbling or gargling sound made by water flowing out of a narrow-necked container. Gargle को हम हिंदी में गड़गड़ाना कहते हैं, उर्दू में गरारा करना, तेलुगु में गग्गोलू. For example, the baby laughed at the gargle of the water in the bathtub. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.